Good evening, students. Today we study the subject perspectives in child development. The first unit is approaches of human development. Then the sub point is principles of development. Then the sub point of principles of growth and development. Carefully hear to me and mindly listen to me. It is a sensitive subject because we know about the students growth and development, which I can study, teach them properly, and I diagnose and we diagnose their growth and development. So we have many knowledge about a child of growth and development. It is very essential for teaching learning process. So we carefully listen and carefully study the chapter of the growth and development. Listen to me, students. It is a very important point. कारण पिलाମାନଙ୍କର ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आमे जदि न बुझी परिबा ताले हम भलो भाबे टीचिंग देई परिबा नाही पढाई परिबा नाही तेणुकर इट इज ए भेरी इम्पोर्टाट पॉइंट. अच्छा आज आम पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्रम उन्नति एवं विकास क्रम विकास प्रिंसिपल नियम गुड़िक कौन प्रिंसिपल्स नियम गुड़िक कौन कौन या भितर रही 10 पॉइंट्स 10 principles. We study principles of growth and development. First number 1 point is the principle of uniform development pattern. The principle of uniform development pattern. का अर्थ एका भलिया जेमति स्कूल कॉलेज रे पिला माने यूनिफॉर्म पिंधि थांती समस्त एका भलिया देखा जिवा पाई सेही भली मध्य ये डेवलपमेंट रो सेमती एका भलिया समस्त कर डेवलपमेंट क्रम उन्नति हेई थाए सेटा कोन द इन ह्यूमन बीइंग्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलोज ए डेफिनाइट पैटर्न. All the development directions and sequences are almost the same for all children, but each child follows its own time schedule of growth. It means the uniform pattern indicates that, as I call that, uniform pattern means all child development in a definite direction. So we call that the uniform development. अर्थात प्रत्येक शिशु समस्त समान आकार में समस्त डेवलपमेंट घटी था. अर्थात समस्ते 10 मास 10 दिन जन्म हो पिला हुआ माने समस्त 10 मास 10 दिन जन्म होती. इन केस ये फ्यू स्टूडेंट्स ये फ्यू चाइल्ड किछि किछि परिवार रे पिलांकर किछि व्यतिक्रम सामान्य घटी थाए किंतु नियम होची समस्तकर समान समय लागि थाए. सेकंड पॉइंट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्पीड वेरिएशन. अच्छा नियम कौन डेवलपमेंट रो स्पीड वेरिएशन माने जेतबेले ताकर डेवलपमेंट हेता है तार स्पीड वेरिएशन माने गति रो वेरिएशन हेता है केमति वेरिएशन हेता देखिबा. अच्छा इट इज ऑब्जर्व दैट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकम्स वेरी रैपिड इन इंफेंसी और अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ एंड लेटर द स्पीड डिक्रीज. अच्छा इट इज ऑब्जर्व दैट यह पर्यवेक्षण करा जाय इट ऑब्जर्व दैट the development speed is very rapid at the time of infancy and childhood. Then it became decrease. अर्थ पिलांकर शैशव अवस्था रे तांकर डेवलपमेंट बहुत रैपिड होता है बहुत क्षिप्र गति होता है एवं पर से धीरे धीरे डिक्रीज होता है कमी जाता है से रैपिड आउ सेमती डेवलपमेंट घटी न थाए. अच्छा rapid form birth to 2 years and 11 to 15 years. Rapid form को जाए थाए rapid form थाए birth to 2 years and 11 years to 15 years. एटा हला rapid stage माने क्षिप्र गति रे ताकर डेवलपमेंट घटी थाए. तेणु करी ये प्रिंसिपल को हम कोन कहले द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्पीड वेरिएशन. ए जो वैरी करूची स्पीड ता
तापर 15 इयर्स आफ्टर 15 इयर्स धीरे धीरे से डिक्रीज हुए तेणु कर वेरिएशन कला डेवलपमेंट गोटे प्रिंसिपल तार रही सब शिशु ठारे से देखा दे थाए एटा होची डेवलपमेंट रो स्पीड वेरिएशन प्रिंसिपल्स देन थर्ड पॉइंट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन the developmental direction the principles of developmental direction is third point क्रम उन्नति रो दिग कौन दिग थाए the growth and development has got its own direction growth and development its have own direction कारण growth and development is a natural development natural process so the growth and development it has own direction ता निजस्व दिग थाए ताको के जानि सुनी केबे बदलै परिबे नाही इट फॉलोस सेफालोकोंडाल सीक्वेंस इट फॉलोस या फॉलो करते अनुकरण करते को सेफालोकोंडाल सीक्वेंस ता सेफालोकोंडाल सीक्वेंस कहले ऊपर मुंड ठारू तळ पर्यंत ताको सेफालोकोंडाल सीक्वेंस कहते तार आगो मुंड ग्रोथ करिवो तापर बॉडी पार्ट ग्रोथ करिवो तापर लेग ग्रोथ करिवो तापर पिलाटी प्रथमे आगो हेड हलैबो राइज करिवो एबो तापर धीरे धीरे से बसिबो तापर धीरे धीरे से गुरुंडिबो तापर धीरे धीरे से चालिबो तार ऊपर ठारू तळ पर्यंत तार डेवलप घटिताय ताकू कहले सेफालोकोंडाल सीक्वेंस अच्छा व्हिच मीन्स दैट द ह्यूमन बीइंग्स ग्रोस फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स इट इज द ह्यूमन बीइंग ग्रोस हेड टू डाउनवर्ड्स तळ आडू वृद्धि पाइथा फर्स्ट द बॉडी एंड लेग्स एक्वायर तापर बॉडी हेड देन बॉडी देन लेग्स एक्वायर the child first attempt to move his head and then try to sit walk or run at first a child try to move his head then his hand and body and then walk and then run this principle is based on physical development of human beings it is called the physical development of the human beings है ना नहीं शारीरिक विकास है कि कारण आगो मुंडर विकास है तापर बॉडी रो है तापर गोड़ रो है एटा है शारीरिक विकास एटा इट इज मेजरेबल इट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम द हेड टिलवर्ड ये प्रिंसिपल को इट इज द अदर हैंड इट कॉल्ड दैट द फ्रॉम द हेड टिलवर्ड याको हम कौन कहया फ्रॉम द हेड टिलवर्ड ता अर्थ एटा को हमें कहया मुंड ठारू पाद पर्यंत तळ आडू हेड टिलवर्ड याको कहिबा किबा अदर हैंड रे कहया कोन अच्छा सेफालोकोंडाल सीक्वेंस याको मध्ये कहि परिया तो ये आछि का भीतर द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन भीतर पॉइंट भीतर आसुछि सेफालोकोंडाल सीक्वेंस एंड फ्रॉम द हेड ऑफ टिलवर्ड माने मुंड ठारू तळ आडू वृद्धि डेवलपमेंट फोर्थ पॉइंट कहला द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस आ गोटे कौन कहला प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस माने प्रिंसिपल नियम कौन डेवलपमेंट रो आ गोटे नियम कौन कहला आगामी मास को सीक्वेंस माने सीमा रेखा आडको केमती माने सीमा रेखा आडको केमती वृद्धि पाई थाए it means that the development takes place from center to periphery gradients एटा कोन हुए ये डेवलपमेंट हुए पड़ो सेंटर रो केंद्र रो माने भीतर एवं सीमा को तार डेवलपमेंट घटिता तार भीतर बाहर को घटिता जो डेवलपमेंट ता माने एटा कहूची इंडिकेट करछ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट माने बौद्धिक विकास को कहूची द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट and then the outward development of heart and chest etc take places at first a child development in the spinal cord means मेरुदंड कारण पिले लक्ष्य कर पिलाटी जतले जन्म होता है से मुंडटा को भी ठीक से क्षय करके देखि पारि न थाए काहे कि कारण स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रांग न थाए मुंडटा तो विकसित हेई थाए प्रथमे तापर स्पाइनल कॉर्ड भी स्ट्रांग हेई न थाए मेरुदंडटा स्ट्रांग हेई न थाए धीरे धीरे से बेक नरम कौन थाए तेणु कर माँ मैंने कौन कर मुंड तले तकिया दियंती एवं से बसिला बेले चाहिला बेले से बेक नड़ कर दिए मुंडे हाथ देके ये करती तेणु कर स्पाइनल कॉर्ड प्रथम तार डेभलप हुए स्पाइनल कॉर्ड डेभलप होला परे तापर आउटवर्ड फर्स्ट द डेवलपमेंट ऑफ ए डायरेक्शन इज स्पाइनल कॉर्ड देन आउटवर्ड डेवलपमेंट एंड हार्ट एंड चेस्ट तापर हार्ट रही थाए तापर चेस्ट रही थाए
हार्ट रे एटा के छोटे छोटे छुआ देखो घंटा लगे निश्वास नहीं पारंते बहुत समय पीड़ित होती कारण हार्ट टा भी कमजोर थाए छोट बड़ ताले एटा कहगला द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस केमती माने भीतरु बाहर पर्यंत डेवलपमेंट को बला प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस ता भीतर रहला स्पाइनल कॉर्ड रो कथा फर्स्ट डेवलपमेंट हेड देन स्पाइनल कॉर्ड देन चेस्ट देन अदर पार्ट्स अच्छा देन फिफ्थ पॉइंट कहला द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी माने डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल कंटिन्यूटी केमती लगातार चली थाए समय माने लगातार चली थाए कंटिन्यूटी रहर चालू थाए से गोटे नियम होची कार डेवलपमेंट रो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूस फ्रॉम बर्थ टू डेथ इन सम और द अदर फॉर्म the development pattern, the development direction, the process of growth and development, it continues from birth to death. जन्म रो मृत्यु पर्यंत तार डेवलपमेंट घटू थाए. In some or other form, the rate of developmental process may not be even, but it never stop until the mental and physical traits reach to their maximum in their individuals. अच्छा फिजिकल ट्रेस मान शारीरिक विशेषता ता अर्थ गोटे डेवलपमेंट बॉर्न टू डेथ माने एटा को हमें कहया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी गोटे डेवलपमेंट जन्म रु मृत्यु पर्यंत ही अनवरत रहर घटू थाए माने प्रोग्रेसिव करू थाए द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअस फ्रॉम बर्थ टू डेथ it is called the principle of a continuity of development. Sixth point, the principle of a general and a specific development. तार development रो principle development रो गोटे principle रही general development and a specific development. अर्थ साधारण क्रम उन्नति एवं specific माने particular development माने क्रम उन्नति तार भीतर कौन रही principle नियम रही से सेटा भी होई थाए. Development proceeds from general to specific. Development proceeds general to specific. से आगे ही थाए साधारण रो specific आरो. केमती सेटा example the child learns first general concepts. First the child learn general concepts. अर्थात जब छुआटी पाठ पढ़ी थाए आमे ताको चित्र देखैला. चित्र देखैला माने से चित्र को सेटा जनरल हला से केवल ता नाटा कहइबो सुनिबो एबो कहि पाइबो. तापर धीरे धीरे से नार स्पेलिंग शिखिबो लेटर शिखिबो एवं तार ना को मन रखिबो ये गुडा सब है स्पेसिफिक हैले. अच्छा एग्जांपल द चाइल्ड लर्न्स फर्स्ट जनरल कांसेप्ट्स एंड देन मेक्स ए डेप्थ और स्पेसिफिक स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल मन करो गोटे पिला संख्या शिखुची 1 ठार न जाए से चिन्हुची से 1 ठार न जाए तापर धीरे धीरे 100 जाए शिखुची तापर देखो निशान शिखुची ताले 1 to 10 जाए बा न्यूमेरिकल एबिलिटी इज द जनरल डेवलपमेंट देन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज द स्पेसिफिक डेवलपमेंट. अच्छा फर्स्ट द चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल हिज फुल हैंड and later he tries to control all the movement of the fingers on his hand. First a student a child try to control his hand then he control to their fingers. बुझि पाले ता अर्थ कोन हला गोटे चाइल्ड जेतेबेले से डेवलपमेंट तार घटुची जेतेबेले ताको हम अक्षर टी सिखौचे प्रथम तीनटा गोल लेखि के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सिखौचे से तार संपूर्ण हाथ ऊपर तार कंट्रोल न थाए से बाउंडर कर सेटा को लेखि थाए ताबले होल हैंड एटा हला तार कंट्रोल न थाए सेटा को हम कहले जनरल डेवलपमेंट जेतेबेले से हाथटा तार धीरे धीरे से गोल टा को बुलेई पारुची से जो डेवलपमेंट हला सेटा हला तार हाथर डेवलपमेंट जेतेबेले से पिलाटी गोल सिखिला परे लेटर अक्षर सिखुची सेतबेले ता फिंगर रो डेवलपमेंट हला ता फिंगर को से कंट्रोल कला सेटा को वाला स्पेसिफिक डेवलपमेंट तेणु करी ये डेवलपमेंट राइज फ्रॉम जनरल डेवलपमेंट टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट. साधारणतः भाव में गोटे चाइल्ड कौन करे प्रथम साधारण डेवलपमेंट को आसे तापर धीरे धीरे से स्पेसिफिक डेवलपमेंट को जाए. अर्थात गोटे उदाहरण सब पिलाटी पाठ पढ़ा आरंभ करे 3टी गोल हम लिखाए 3टी गोल को से लेखुते ठीक से लिखि पारे नहीं गोल 3टा करि पारे नहीं कारण तार संपूर्ण हैंडटा ताकू तार कंट्रोल डेवलपमेंट हेई न थाए जब डेवलपमेंट हे 3टा से लिखि दिए सेतबेले जो हाथर कंट्रोल आसे सेतबेले तार
फिंगर ऊपर आसे कंट्रोल जेमती आमे भी चतुर्थ पंचम रे पढिला बेले तृतीय पढिला बेले अपन अक्षर गोल न थाए सेटा हमर फिंगर रो कंट्रोल न थाए तामे स्पेसिफिक हेम थाए जेतेबेले हम अक्षर गोल कर सुंदर करी लेखे सेतेबेले हम फिंगर रो कंट्रोल आसे तेडु कर सेटा डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम राइज फ्रॉम by sequence from general development to specific development. ताले अच्छा सेवेंथ पॉइंट देला द प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट ताले डेवलपमेंट रो टोटल डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट को the development does not mean only the physical development means does not mean for physical development means physical development psychological development emotional development include all developments अच्छा but includes mental social emotional cultural etc we cannot say that the development is only physical development that is wrong the development means the physical development the emotional development the environmental development the social development everything development is under development all these types of developments are interrelated all developments are interrelated because of intellectual development is interrelated to physical development physical development is interrelated to the social development is interrelated to the environmental development it is the total development means the total development the human being is an intelligent person it is environmental include environmental development social development and physical development and intellectual development all are the total development all these types of developments are interrelated and interdependent also right interdependent से सब गुड़ा डेवलपमेंट इंटररिलेटेड रही संपर्क रही इंटरडिपेंडेंट से भी डिपेंड करता है कारण फिजिकल डेवलपमेंट हेले तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हेले तो सोशल डेवलपमेंट हो सोशल डेवलपमेंट हेले तो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हो तेणुकर प्रत्येक भितर इंटररिलेटेड प्रत्येक ऊपर निर्भरशील इट इज एन यूनिफाइंग प्रोसेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट এটা একটা ইউনিফাইং প্রসেস এটা একটা স্বতন্ত্র ধরনের প্রসেস টাইপস অফ গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এগুলা হচ্ছে একটা স্বতন্ত্র ধরনের ডেভেলপমেন্ট গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইয়া ভিতরে সমস্ত ইন্টার রিলেটেড রহিবে ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট বি রহিবে এইটা হলা টোটাল ডেভেলপমেন্ট द प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट 8 नंबर द प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग ता पर स्टेज आसीबो द प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग जेतेबेले गोटा पिला मैच्योरेशन हबो परिपक्वता आसीबो तापर लर्निंग एवं लर्निंग माने पाठ पढिबो शिखिबो तेडु करी से पिलार किछि ना किछि परिमाण रे डेवलपमेंट हे जाइतिबो मैच्योरेशन आसी जाइतिबो नै नियर अबाउट टू मैच्योरेशन then the principle of maturation and learning second both learning and maturation are interrelated factors of work both development means learning and maturation are both are interrelated factors of work काम करिया पाई इंटररिलेटेड रहिता है कार लर्निंग रो मैच्योरेशन हेले से लर्निंग करबो लर्निंग हेले से कॉलेज से मैच्योरेशन करबो तन करी इंटररिलेटेड रहिला हेले एवरी डेवलपमेंट हैज गॉट देयर ओन लिमिट्स प्रत्येक डेवलपमेंट तार निजस्व सीमा थाए लिमिट्स तार प्रत्येक डेवलपमेंट रो निजस्व सीमा जेंति हमर फिजिकल डेवलपमेंट 30 up to 30 years पर्यंत ग्रोथ करता है तापर धीरे धीरे डिक्रीज होता है सेम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अप टू 60 70 इयर्स तापर धीरे धीरे डिक्रीज करता है लोग भी आफ्टर 70 इयर्स तार मेमोरी फेल होउची ना तेडु करी तार ओटा लिमिट स्टेज थाए लिमिट एज थाए द चाइल्ड मे बी मैच्योर्ड फॉर समथिंग एंड मे नॉट बी मैच्योर्ड फॉर अदर्स किछि पिला माने से समान बयस रे पिला माने किछि मैच्योर्ड हे जाई जांती किंतु किछि पिला भी हे न था differ the maturation the learning is different from one child to another child तेणुकर से एमती भी हटी थाए एटा जीव maturation and learning भीतर therefore the theory of development emphasize on the factor of maturation adjustment requirement opportunities and learning accordingly the efforts of coaching etc maturation and learning efforts
emphasize development, maturation, adjustment, requirement, opportunities एगुड़ा सब माने सुजोग एवं मैच्योरिटी ऑफर ये सब मैच्योरेशन पर पिलार आसी थाए एवं लर्निंग अकॉर्डिंग से पढ़िबा आडकू अग्रसर हेई थाए द इफोर्ट्स ऑफ कोचिंग बाय से इफोर्ट देखाई थाए एवं कोचिंग नबा पाई से इफोर्ट देखाई थाए अच्छा टू एक्सेलरेट द लर्निंग आर नॉट डिजायरेबल टिल द माने एक्सेलरेट त्वरान्वित करिबा बा डिजायरेबल काम इच्छा करिबा इच्छा शक्ति जागृत करिबा लर्निंग रे से देखाई थाए चाइल्ड गेट्स प्रॉपर मैच्योरिटी फॉर द प्रपोज माने पिलाटी कोन करता है तार जो मैच्योरिटी प्रॉपर प्रपोज पाई से देखाई थाए उदाहरण स्वरूप गोटे पिला मिशाण पढ़िया को भल पाउछ से मिशाण पाई देखाई थाए से समय ये स्टेज भीतर जीव कोन ए जो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग जेतल गोटे पिलार मैच्योरेशन हेइता से लर्निंग करता है तार मैच्योरेशन आसे से लर्निंग करे ता तो गोटे पिला यदि सांख्यिक जिनसटा भल पढुची से मिशाण फेडाण गुण भल करता है गोटे पिला यदि बही मात्रा पढ़िया को भल पाउची गप पढ़िया पाउची से साहित्यटा को भल करता है तो तार गोटे तार मैच्योरिटी अनुसार तार प्रपोज से चाइल्ड रो इच्छा अनुसार से तार डेवलप करई थाए द लेवल ऑफ मैच्योरिटी इन चिल्ड्रन वैरीज तेणुक गोटे चाइल्ड डेवलपमेंट भैरी करता है डिफरेंट करता है कारण कौ पिला साहित्य पढ़िया भल पाइला बेले कौ पिला गणित भल पाई था कि इंग्लिश भल पाइला बेले कि सामाजिक भल पाई था तेणुक भैरी करता है तार जार मैच्योरेशन जमती जार लर्निंग कैपेसिटी जमती जी जमती लर्निंग करे से तार मैच्योरेशन सेमती आसे तेणुक जी जो बाटे लर्निंग कला thus this principle of growth and development says that they basically acquire as a result of maturation and learning. Maturation affects the growth and development and in turn they affect learning. ताले maturation affect करता है maturation टा affect करता है the growth and development and in turn they affect learning. माने maturation टा ताको learning रे affect करता है जो development and growth टा maturation development growth and maturation affect to the लर्निंग ऊपर तार प्रभाव पड़ता है सत कथा गोटे पिला जदि ग्रोथ ठीक करनी कि तार डेवलपमेंट हेनी कि तार मैच्योरेशन आसुनी तार भी लर्निंग टीचिंग लर्निंग रे भी भलो प्रोसेस से करि परिबो नाही एटा ठीक कथा पॉइंट हैला 9 द प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन जो डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल प्रेडिक्शन माने भविष्यत कथा आमे गोटे पिलार बिफोर नॉलेज को देखि से भविष्यत रे कोन करिवो आमे कहि देई थाए पूर्व वर्ष से कौन करिछि पूर्व वर्ष से कौन अचीव करिछि आमे कमिंग ईयर को मते कहि दिए ये पिलाटा बारंबार वर्ष 2 वर्ष हला एई भली अचीवमेंट करछि एई भली से टीचिंग लर्निंग करछि तार मैच्योरिटी एई भली तेनु करि से आगु को एई भलिया करिवो तेनु करि से गोटे प्रिंसिपल मध्ये रहिछि डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन माने भविष्यत कथा हमें देखि गिरी कहि दे बिफोर नॉलेज रे हमें एटा कहता बुझि पाले द प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन भविष्यत कथा केमती हमें कहला द प्रिंसिपल कन्वेस अस दैट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल ताले द प्रिंसिपल कन्वेस प्रिंसिपल टा से नियमटा जो डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल टा बहन करके आइते कन्वेस बहन करी आनिता है अस दैट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल माने ग्रोथ और डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल माने अभिधेय ग्रोथ डेवलपमेंट केमती अभिधेय से एक्वायर करके आनते बहन करके आनी थाए केमती वी कैन प्रेडिक्ट समथिंग रिगार्डिंग द मेंटल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन्स बाय स्टडीइंग द रेट ऑफ देयर डेवलपमेंट इन प्रीवियस ईयर कहला एई कथा कहला ताले हमें प्रेडिक्शन केमती करि थाए गोटे पिलार प्रीवियस ईयर बिफोर ईयर तार मैच्योरेशन तार डेवलपमेंट रेट देखिकिरी तार ग्रोथ रेट देखिकिरी हमें कहि देई थाए जे हमें प्रेडिक्शन करि देई थाए इट इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रेडिक्शन एटा को प्रेडिक्शन बोली कहबा हमें प्रीवियस ईयर रो नॉलेज देखि प्रीवियस ईयर रो तार देखिकिरी मैच्योरेशन देखिकि तार डेवलपमेंट देखिकि रेट देखिकि स्कोर देखिकि हमें कहि देई थाए जे से पिला कोन करिवो तेणु कि एटा को कुआ जाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन तामाने प्रीवियस ईयर रो रेट रो हमें से पिला रो भविष्यत कथा कहि देई थाए प्रेडिक्शन पॉइंट 10 टाइम केते हला देखलो प्रिंसिपल 10 द प्रिंसिपल ऑफ
कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कौन? द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, एकाठी गदा करवा कम्युनिकेशन। रिप्रेजेंटेशन माने पुनरुद्धार पुनर्लेख करवा गोटे जगह को प्रिंसिपल रही ग्रोथ डेवलपमेंट गोटे जगह को तार डेवलपमेंट गोटे जगह केंद्रित करता है पुणी ताको कौन करता है पुनर्लेख करता है जहां से शिखिता है जहां डेवलपमेंट करता है जहां से उल्लेख करे पुनर्बार पुणी उल्लेख करे ताने मेमोराइज करिथाय से ताले तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिकैप्चुलेशन सेटा पुनरुद्धार केमती करता है पुणी थरे से ताको कैप्चर करिथाय पूर्व जहां शिखिता है ताले सेटा कौन द डेवलपमेंट इज ऑलवेज कम्युलेटिव एंड रिकैप्चुलेटेड। डेवलपमेंट सब बड़े कम्युलेटिव माने एकाठी करके से गदा करता है बहुत गुड़ा शिखिता है जो संख्या शिखिता है निशान शिखिता है पेड़ा शिखिता है गुण शिखिता है से गणित करे सेटा को आमे कहले कम्युलेशन। एवं रिकैप्चुलेशन अर्थात से मिश्रण फेड़न गुण शिखिता है बोली से अन्य हरण शिखिता है दशमिक शिखिता है भग्नांश शिखिता है सेटा गला हमर रिकैप्चुलेशन से आउ थे कैप्चर कला अर्थात से जोटा पूर्व शिखिथिला ता जरिया से आउ गोटे जिंस से करि पारिला तेबेल को ताको कहले प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिकैप्चुलेशन। तारे इट इज द सम टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस of child and is not based on single event or changes. It is the various field. A child collect in the various field. ये various field and the combination बहुत various field से संग्रह करता है एवं गोटे जगह जमा करता है अर्थात पिलाटी संख्या शिखला मिसाण शिखला फेड़ाण शिखला सब शिखला शेष से विभिन्न प्रकार गणित कला सेटा कौन सब कलेक्शन कला तापर गोटे जगह से केंद्रीभूत कला एवं जो पूर्व शिखिथिला कैप्चर करथिला ताको रिकैप्चुलेशन बोली हम देखिले माने से जो पूर्व शिखिथिला जो गणित भग्नांश गणितटा कला कि दशमिक गणितटी कला सेटा को हम रिकैप्चुलेशन करला हैला ताले कोन हला बेस्ड ऑन सिंगल इवेंट और चेंजेस डेवलपमेंट इज कॉल्ड रिकैप्चुलेटेड बिकॉज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स चरित्र लक्षण ऑफ वन स्टेज कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन अदर स्टेजेस ता माने ताको कोन करता है तार जो लक्षण गुडी को कैरेक्टरिस्टिक्स गुडी को अच्छा ऑफ वन स्टेज कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन अदर स्टेज गोटे स्टेज से जो शिखिता है ताको अन्य स्टेज नेकि एस्टैब्लिश करिता है अर्थात पिलाटी जत तृतीय श्रेणी रे पढ़िता है से तृतीय श्रेणी रे जेतिकी से कैप्चर करिता है जेतिकी डेवलपमेंट करता है ताको पंचम श्रेणी रे चतुर्थ श्रेणी रे ताको ताले द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिकैप्चुलेशन या भितर रहुची ता अर्थ पिलाटी चारियाडू माने वेरियस स्टेजेस से कनेक्शन करिथाए तार नॉलेज एवं गोटे जगह केंद्रित करिथाए एवं रिकैप्चुलेशन अर्थ गोटे जिंस जतले शिखिथाए से आ गोटे जिंस जतले करे ता सहारा रे सेटा जे कैप्चर करिथाए ताको सेटा जे अन्य जगह ताको यूज कर ताको रिकैप्चुलेशन बोली कहबा से कैप्चर करिथाए तले इति सेही कथा कहला बिकॉज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन स्टेज कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन अदर स्टेज ताले गोटे तार नॉलेज ताको एस्टैब्लिश करता है अन्य गोटे स्टेज रे जेमति मन करे मिसाण के पिला शिखिथिले संख्या रे शिखिथिले मिसाण करे बा मिसाण फेडर गुण रे शिखिथिले गणित करे से सेही भଳି तेन गोटे स्टेज रे से जेतबेले ताको शिखिताए से आ गोटे ये रे व्यवहार करे ता अर्थ से वेरियस फील्ड रो कलेक्शन कला और गोटे जगह से ताको यूज कला एग्जांपल सेल्फ लव of earlier years may also be observed in the adolescent years. ताले सेल्फ लव से जतले कोन जे तार जतले मैच्योरिटी पाई the knowledge and understanding of the nature of human growth and development is important for a teacher because of the knowledge and knowledge of understanding and development and growth and development is very essential for a teacher to teach the students. It is very important because कारण गोटे शिक्षक गोटे पिलार गोटे चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोथ एवं अंडरस्टैंडिंग बहुत जानिबा बहुत जरूरी सेटा कौन कौन से पॉइंट गुड़िक ध्यान दिंतु टू नो एंड अंडरस्टैंड द लर्निंग रेडीनेस एंड मैच्योरेशन ऑफ हिज लर्नर्स एंड टू टीच इफेक्टिवली ताले गोटे टीचर कौन
to know and understand the learning readiness and maturation of his learners and to teach effectively. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ତା ରିଡନେସେସ୍ ଜାଣିପାରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟିଚର ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଟୁ ଚୁଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଚୁଏସନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଫର ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏନହାନ୍ସ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ କଣ କରିଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥାଏ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏନହାନ୍ସିଂ ତାକୁ ପ୍ରଖର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ସକ୍ସେସ ଏ ଟିଚର ହେଇପାରିବା। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ୍ ହି faces in adjustment of his personality and also his learning abilities in skills। ତାହେଲେ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ତାର ସ୍କିଲ୍ ଏବଂ ନଲେଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ତାର ଦକ୍ଷତା କେତେ ଆମେ ଯଦି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଟୁ ଗିଭ୍ ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କାଉନସେଲିଂ ଟୁ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ ପ୍ରପର ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଟୁ ଗିଭ୍ ଦେଇପାରିବା ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ ମାନେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ପଥ ଦେଖେଇ ପାରିବା ଆମେ କାଉନସେଲିଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବା ଗାଇଡାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କାଉନସେଲିଂ କରିପାରିବା और ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ତାକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ବିଷୟରେ ଆମର ବିଫୋର ନଲେଜ ଥିବ। ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏବାଉଟ ହାର୍ମୋନିୟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ thus the above educational implications of growth and development will help the teacher to proceed in the correct direction। तेणुक डेभलपमेंट और ग्रोथ को जब गोटे टीचर जानी से पिलाटी प्रॉपर डायरेक्शन प्रॉपर दिगरे नवाई साहाय्य करिवो एवं ये टीचर कैन बी ए गुड टीचर एंड ही कैन टीच द वेल डायरेक्शन प्रॉपर मेथड प्रॉपर टीचिंग डायग्नोसिस टू द स्टूडेंट्स। जदि से स्टूडेंट्स रो डेवलपमेंट और ग्रोथ विषय से जानी ताले से ताको ठीक से टीचिंग दे परिबो। तेणु करी ये फॉर ए टीचर इज वेरी एसेंशियल वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इज द अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एंड मैच्योरेशन ऑफ ए चाइल्ड and the stages and principles of the growth and development it is the very essential very important point of the teacher। it can be how can we teach the students and whether we don't know about the students growth and development we cannot teach them effectively teaching। so a teacher basically very important point he collect the growth and development of a child and try to again and again the growth and development about a child। why? because of we teach the student whether when we did not know about the growth and development and psychology and emotional and social and environmental knowledge of a child we cannot teach proper direction proper teaching proper method proper student। so in future teaching learning process is not well it is not effective it is not good for a student for a teacher। तेणुक आम गोटे पिलार डेभलपमेंट इमोशनल एनवायरमेंटल ग्रोथ डेभलपमेंट विषय ज्ञान जाना बहुत जरूरी। से पिला को पर्यवेक्षण कर ऑब्जर्वेशन करवा तापर आम टीचिंग देवा ताहले से टीचिंग हमर इफेक्टिव वेरी इफेक्टिव हबो। तेणुक आज टॉपिक होची एतिकी सेतिकी मु कहूची पिले नेक्स्ट क्लास रे आम नेक्स्ट चैप्टर पढ़िबा सेटा होची स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस गुड़ाक कौन कौन।